Afternoon, ma'am. मेरे फोन में तो 12 नहीं बजे। कोई Good नहीं। afternoon, all of you. And I would not accept any kind of misbehavior, Saurav. So please be careful from next time onwards. You are not in school anymore now. You are in college. And so please behave like mature people. Good afternoon, ma'am. I am connected through DTU ID, DTU internet. So just let me know if there is any issue regarding my voice. If it is distorting, please let me know. No, I'm ma'am. connected. Okay. And And otherwise, it's I'm clear. connected through DTU network. All of you are requested and directed both to switch on their cameras to be there in their video mode and mute mode. Ma'am, I'm having some problem with my webcam today. It's Okay. Akshit. So let's start the class. So yesterday what we were doing was we started with sequences and series. So sequences and series. Okay, just a minute. I'll disable the chats. Okay. So we started with sequences and series. We saw some preliminary definitions like sequences and of sequences, how we define a series from a sequence, and how we define a sequence again from a series, and then how we check the convergence or divergence of a series. We are actually interested in Ma'am, the convergence or divergence of a series. Yes. hello. Ma'am, I have doubt with the bounded sequence and monotonic sequence. Yes. Ma'am, please explain it again with some example. So we'll do some examples. You'll get to know monotonic sequence क्या होती है? The sequence that is either increasing, मतलब all the elements that okay. Just a minute. Um, is my screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. So Yes, we ma'am. have Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, some Yes, students ma'am. are unable to join, ma'am. They are saying. okay. Who is unable to join? Ma'am, Ankit Kumar Yadav, ma'am. Ask him to give me his email ID. Just type in the email ID of that student. Okay, ma'am. Just type in here his email ID. I will invite him. Please do it quickly. We don't have all the time in a 1 hour Ma'am, class. ma'am, he went offline, ma'am. Ma'am, I Oh, have that's sent him fine. message. That's fine. What is his name? Ma'am, Ankit Yadav. Ankit Kumar Oh, Yadav, I guess. okay. Rest of you, please mute yourself. Is my screen visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So if Yes, I ma'am. say the sequence is monotonic, then every element
un plus 1. I'm just having some problem with this. So every nth element is less than or equal to the n plus 1th element. Okay? Sorry, this. Fine. And when we say this is for all the n equal to 1 to all the elements. Fine. Bounded sequences, when we are saying that all the elements in a sequence are less than capital M, where M is some particular constant. In that case, all the elements are bounded above by this constant M. And when we say that it is bounded below, then it means M is less than UN for n equal to Ma'am, any sorry n. to interrupt, ma'am. Ma'am, I Hanji. have sent Ankit Yadav's mail ID, ma'am. Ma'am, if you could please send him request to join, ma'am. Okay. So this way it is monotonic and bounded. We are going to see some examples. So if you have a sequence like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and so on. Is this sequence bounded? What do you think about this sequence? No, Ma'am, it's ma'am. unbounded. Ma'am, it is not Yes, bounded. ma'am. Lower. It is not bounded. Because Yes, ma'am. this is, Not if I bounded. say that this Not is, bounded. if I say that this is an infinite bounded. sequence, Bounded, ma'am. only one of you is going to answer. If you hear that the question has been answered and you think that it is correctly answered, please don't repeat. Do not repeat if you think the question has been correctly answered. Akash, please mute yourself. Akash, God, please mute. Yes. So, so 1, 3, 5, 7, 11 is not. If I say that this is a infinite sequence, then it is not bounded above, right? And is it a monotonic sequence or non-monotonic? Monotonic. It's Mono- monotonically increasing sequence. Today I entertained 2 requests for entering the class late, that is beyond 12:05. Tomorrow onwards I will not allow. This is last time. So similar. Now if I want to check, अब हमें ये पता है कि that this sequence is not bounded and this sequence is monotonically increasing sequence. So can we find out can we test whether the sequence is convergent or divergent? Can we check this? How do we check this? Whether the series corresponding to this sequence is convergent or divergent. How do we check that? How do we define the series? Ma'am, we will first find the nth term and then apply limit. Right. Ma'am, So 2n minus 1. for this particular sequence, we are going to write Sn is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus and so on plus 2n minus 1. This is how my nth term is. I'm really sorry. This is how my nth term is defined. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. So now what is limit? Now what is limit? Sn n tending to infinity
Find out the limit. Ma'am, divergent. Why it is divergent? What is the answer you are getting? Ma'am, it will be when we put the limit, it will be infinity. It will be infinity. How it is coming to be infinity? You have to find this sum. You have to find this sum. What you are doing is you have to find this value. Limit n tending to infinity Sn, and Sn is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to 2n minus 1. What is this sum equal to? This sum is equal to Sn. n square. No, Sn is equal, yes, it is equal to n square. Or you can write down it as n by 2 plus n minus 1 into 2, which is equal to n square. Okay? So now if you find the limit of this Sn, which is equal to limit, this is equal to limit n square, n tending to infinity. So this is equal to infinity, right? Any doubt on this? No, ma'am. No, ma'am. No, So this ma'am. was a simple question. This was a simple question to see how to find the limit. How to check if a given series is convergent or not convergent. So here we are getting the limit as infinity. So the series is not convergent. It is divergent. Now next question, please write down. Test the convergence of the series. Test the convergence of the series 6 minus 10 plus 4, plus 4 plus 6 minus 10 plus 4 plus 6 minus plus 6. You can just write down 6 minus 10 plus 4 plus 6 minus 10 plus 4 plus 6 minus 10 plus 4 up to infinity. You have to check the convergence of this series. Ma'am, it is not convergent. What it is? What is Ma'am, it is an Oscillating. oscillating. It is What is oscillating. Sn? Right, it is oscillating. So what are the possible limits? Ma'am, it could be 0, 6, 0 minus 4, 6. minus 4, And 6. 0, 4 and minus 6. So possible limits can be 0, 4, because agar hum pehla term, if my S1, if I just take my S1, it is 6. If I take S2, it is minus 4. If I take S3, it is 0. अब उसके बाद से दोबारा S4 लेती हूँ, S4 में 6 आ जाएगा, S5 में -4 आ जाएगा, S6 में 0 आ जाएगा, S7 में इस तरह से हम अपने अगर यहाँ पे S1 डिफाइन करेंगे, S2 डिफाइन करेंगे, S3 डिफाइन करेंगे, और इसी तरह से अगर हम Sn डिफाइन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि Sn क्या है, if it is n plus 1 or n plus 2, तो उसके बेसिस पे its limit are going to be 6, minus 4 and 0. So these are the possible limits. So we have 3 limits here. So the series here is going to be oscillating. It is oscillating between these 3 values, right? So next, please find out the convergence of the series 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. 1 square plus 2 square plus 3 square n square
like this. Find out whether the series is convergent or divergent. Ma'am, divergent. Divergent. Yes, it is divergent. What is the limit here? Infinity. Yes, it is infinity. Now find the convergence of geometric series. Geometric series क्या होती है? Ma'am, which have a common ratio. So how you Fixed are going to combination. represent the geometric series? Ma'am, AR square, AR cube. Yes. Up to nth element कैसे define करेंगे? अगर आपको यहाँ पे Sn define करना है, if you have AR to the power n minus 1. N minus 1. by. Okay, so I'm saying how will you define Sn? I'm not saying how will you define the nth element of the sequence. I'm saying how will you define the sum of the first n elements. A into R raised to the power AR to the power n minus 1 upon R minus 1. R minus 1. Ma'am, for R greater than 1. So you are going to define it as 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R. R is not equal to 1. R is not equal to 1. 1. Right? So this is how you can define this sequence. This sequence of sums. Now, what you have to do is, now R is not equal to 1. R can be greater than 1 or R can be less than 1. If I say it has to be mod of R greater than 1 or mod of R less than 1. So now you have two cases. Now check for both the cases. What do you have? For which it is convergent and for which it is divergent. Ma'am, for a general For R series. greater, So ma'am, next, for R greater, ma'am, for R greater than 1, it's divergent. For R less than 1, it is convergent. right. So what are the limits are you getting? मतलब अगर हमारा R less than 1 होगा, तो what is the limit that you get? It will be some finite number. Sorry? Ma'am, it depends upon the ratio. It will be finite number. If R is Ma'am, less it than will 1. be A. It will For be R A. less than 1, A upon 1 minus R. A upon R minus 1. upon 1 minus R. So if I say that mod of R is less than 1, then in that case R raised to power n will tend to 0. So the limit is going to be A if mod of R is less than 1. If mod of R is greater than 1, then in that case R raised to power n will tend to infinity. Right? And in that case, you will have Sn equal to limit of Sn equal to infinity. Right? Yourself. Ma'am, won't it be A upon 1 minus R when it is mod R less than 1 limit? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा. Reason is A upon 1 minus R किसका formula होता है? When you have a infinite series. Here we are taking the sum of partial sum. Here we are taking partial sums. तो जो partial sums होते हैं, आपको S1 calculate करना है, S2 calculate करना है, Sn calculate करना है. तो उस केस में how do you represent this partial sum? Sn कैसे represent करते हैं आप? Sum of geometric series 2, 4, 8, 16, 32 कैसे represent करेंगे अगर मुझे सिर्फ S4 चाहिए? So it is represented as A into 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R. Right? अगर infinite series होगी, then we are going to represent it as, then the sum is S is going to be A upon 1 minus R. Fine? So now we understand अगर geometric series है, it is a very important result. अगर आपके पास geometric series है, तो उस केस में the series is going to be convergent if the common ratio is less than 1, and if the common ratio is greater than 1, then the series is going to be
then series is going to be Divergent. Divergent. and Divergent. R is equal to 1. Diverging. And sorry, what if Ma'am, R not defined. Not Not defined. defined. Not वो defined. डाइवर्जेंट होगी, फॉर्मूले के हिसाब से नॉट Divergent. डिफाइंड होगा, लेकिन असली में तो डाइवर्जेंट ही होगी क्यों? मैम। जैसे हर बार हम 1 ऐड करते जाएंगे, अभी भी कॉमन रेशियो 1 है, लेकिन ये सीरीज डाइवर्जेंट है। नहीं 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 नहीं, Ma'am- एक सेकेंड। अगर Ma'am, आपका R- मॉड ऑफ R इक्वल टू 1 है, तो R कैन बी +1 और R कैन बी -1. Ma'am, it will be convergent. मैम -1 में भी डाइवर्जेंट रहेगी ऑक्सीलेटिंग, और +1 में भी डाइवर्जेंट रहेगी। तो Ma'am, एक बेटा convergent है। एक सेकेंड, आप इसको सीरीज बनाकर देखिए कि कैसी होगी वो सीरीज, ठीक है? इट्स बेटर टू डिफाइन अ सीरीज। तो अगर R इक्वल टू 1 है, तो आपकी सीरीज क्या होगी? A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A एंड सो ऑन. दिस इज योर सीरीज. So this Yes, is going to be divergent series. ठीक है, आपका Sn क्या हो जाएगा? Sn is equal to An. A into n। ठीक है, और उस केस में अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी इंफिनिटी. अगर आपका R -1 है, मैम ऑक्सीलेटिंग रिजल्ट आएगा। तो ऑसिलेटिंग रिजल्ट आएगा A माइनस A प्लस A माइनस A प्लस A माइनस A एंड सो ऑन. तो उस केस में अगर S1 है, सॉरी Sn है, तो आंसर इज A. Sn +1 होगा तो वो 0 हो जाएगा. तो लिमिट इसके अंदर A हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, विच इज नॉट यूनिक. So the answer is going to be oscillating. It means the series is oscillating in case the R is equal to -1. Fine? Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now just Yes, let's see couple of more rules. Couple of more rules says that the nature of infinite series does not change. You can just listen these rules. They are not as such very. You can just listen these rules. The nature of the infinite series does not change by the addition or removal of the finite number of terms from the series. आपको पता है जो infinite series है उसमें infinite elements है, तो उनमें से अगर हम थोड़े से एलिमेंट्स हटा देंगे या ऐड कर देंगे तो नेचर ऑफ द सीरीज विल नॉट चेंज. सिमिलरली अगर हम पूरी सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, द नेचर ऑफ द सीरीज इज नॉट गोइंग टू चेंज. फाइन. The nature of the series, I'll repeat, the nature of the series is not going to change. By nature I mean if the series is convergent or if the series is divergent, then the nature of the series is not going to change. वो convergent है तो convergent रहेगी और divergent है तो divergent रहेगी. उसके नेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर हम उस सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उस सीरीज को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या उस सीरीज में हम कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं या हम उस सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, the nature of the series is not going to change. Second thing is, if suppose I have two series like UN and if I have these two series UN and VN, then summation of these two series, that is UN plus Vn, is convergent if both UN and Vn are convergent. So if UN and Vn are convergent, then it means sigma of UN plus Vn is also convergent. ठीक है? So can you give me an example for this question? Can you give me an example for this question? कि अगर हमारे पास दो कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका सम भी कन्वर्जेंट होगा.
ठीक है, लेकिन अगर सम कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि जो उसके रिस्पेक्टिव सीरीज है यूएन और वीएन वो भी कन्वर्जेंट होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है. So can you give me an example? Can you feel this and give me an example? मैम कोई भी दो जीपी में जिसका r लेस देन 1 हो जाएगा वो दोनों कन्वर्जेंट हो जाएंगे और उनका Right. समेशन भी कन्वर्जेंट. Something like if you have 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/9 plus 1/8 plus 1/27. If I take something like this, I know it is coming very bad. Yes, but ma'am. It is convergent. So in this case, it is going to be convergent. So I hope it is not creating so much mess here using this. Is it understandable, class? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Okay, beta. Excuse me, ma'am. Anji? Ma'am, can you please repeat the GP question because ma'am you are not audible at that time. So you can take the notes from your class friends. Okay. और ma'am. जीपी में सिंपल हमने ये डिस्कस किया था. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच सेज दैट कि अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसके अंदर इफ r is greater than equal to 1, then the series is divergent. If r is less than 1, then it is convergent. If r is equal to -1, then the series is oscillating. This is the conclusion of the question that I have told you. मैम बुक मिल नहीं पा रही है मैम, तो मैम आप कोई स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे मैम आगे? अभी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप करिए उसको. मैम वही एक बार सिलेबस भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए. आप DTU वेबसाइट से जाके ले सकते हैं. मैम वेबसाइट पे मिलती ही नहीं है. I shared the link last time. कब? I shared the link on chat last time. You can take it from your classmates. DTU वेबसाइट पे आप सीधा यही लिखेंगे ना, DTU मैथ्स सिलेबस. यस मैम. आपको मिल जाएगा MA 101 के नाम से. ओके मैम. हाँ जी. मैम तो आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करेंगे मैम कोई ऐसे? See, जहां पे जरूरत होगी I will provide, जहां पे जरूरत नहीं है I will not provide. If I provide you the PDF, then I don't think so that you need the classes, right? नो मैम अभी बुक्स मिल नहीं पा रही है, लाइब्रेरी भी बंद है मैम, इसलिए तो. हाँ तो मैं लिखवा रही हूँ ना, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ, लिखवा भी रही हूँ, right? If you have any doubt, I am Yes, ma'am. clearing that as well. So that should not be a problem. I am doing ample number of questions in the class. और हम बहुत स्लोली चल रहे हैं, हम बहुत फास्ट भी नहीं चल रहे. So that you get acquainted with the technology this time. फर्स्ट यूनिट में मेरा यही टारगेट है कि आप पहले अच्छे से समझ जाए, जहां पर आपको जरूरत होगी जो चीज जैसे देने की आई विल गिव यू दैट. ठीक है? ओके मैम. हाँ, आप क्लास अटेंड करिए, क्लास में सारे नोट्स लीजिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है? Next is your positive term series. Write down next topic, positive term series. So you can write down the definition of a positive term series, an infinite series in which all the terms, an infinite series in which all the terms after some finite number of terms, an infinite series in which all the terms after some finite number of terms are positive is called
are positive is called a positive term series. Is called a positive term series. For example, something like -5, -4, -3, -2, -1, +1, 2, 3. Sorry. +2, +3, +4, +5, plus, and so on. So after some, this is an infinite series, and in this infinite series, all the terms are positive after these 5 terms. -1, -2, -3, -4, -5. After these 5 terms, all the terms are positive. Ma'am, we will include 0 also. Sorry? Ma'am, Yes, 0 you can will also. include. Yes, you can include, but it is not necessary that how you define. As I told you, the nature of the series does not change if you add or remove some numbers from the series. So the nature of the series does not change because the nature of the series is defined by the infiniteness of the series. जो सीरीज आपको पता है बहुत बड़ी है, अगर आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स हटा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? मैम एक बार डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दीजिए. An infinite series which has all the terms after finite number of terms are positive. An infinite series in which all the terms are positive after finite number of terms is called a positive term series. आप simple example देखिए इसका कि एक सीरीज है जिसमें कुछ टर्म्स हटाने के बाद सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं. After some number of terms, all the terms are positive. Is called a positive term series. So next is a theorem. Not theorem. We are not going to do the proof of this theorem, but you need to understand this theorem. Ma'am? The Cauchy, yes. मैम जिस सीरीज में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है उनको पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं बोलेंगे. नहीं, उसको भी वो तो है ही. उसमें तो आपके पास सारे एलिमेंट्स, मतलब आपको ये नहीं है ना कि कुछ एलिमेंट्स हटाने के बाद उसमें सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं. उसमें आप ये कह सकते हो ना 0 टर्म्स हटाने के बाद आपके पास सारे टर्म्स पॉजिटिव रह रहे हैं. ठीक है मैम, ठीक है. ठीक है. मैंने याद है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटाने के बाद, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, एनी नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटाने के बाद आपकी सीरीज के अंदर यू आर लेफ्ट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विच आर ऑल पॉजिटिव. ठीक है. ओके मैम. तो नेक्स्ट यू कैन. हाँ जी मैम, ये जरूरी है कि सभी कैंसिल हुए सारी फाइनाइट टर्म्स? सॉरी, क्या कहा आपने? ये जरूरी है कि जो टर्म्स है फाइनाइट ये कैंसिल हो, जैसे -5 तो +5, -4 +4? नहीं, जरूरी नहीं है. ओके, हम कंसीडर नहीं कर रहे बस उनको. हाँ, कंसिडर नहीं कर रहे. ओके ओके, थैंक यू. ठीक है. मतलब आप ये देखिए कि इसका मतलब ये है, ये कहना क्या चाह रहा है, इस आप अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, ये कहना क्या चाहता है कि हम अपनी जो लिमिट निकालेंगे एसएन, वो हम लिमिट कैसे निकालते हैं? एसएन से निकालते हैं. ठीक है. अगर हम अपनी सीरीज के अंदर सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को कंसिडर करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड, विच इज एन इनफाइनाइट सीरीज, उसका हम एसएन निकालते हैं. सपोज आपके पास सीरीज, एक सेकेंड, आपके पास कुछ सीरीज है. ठीक है. कुछ उसमें माइनस एलिमेंट्स हैं. ये आपके पास सारे माइनस एलिमेंट्स हैं विच अकाउंट्स, और इन सब एलिमेंट्स का जो सम है, जो माइनस एलिमेंट्स हैं उन सबका सम सपोजिंगली -k है. ठीक है. -k. अब इसके बाद सारे प्लस एलिमेंट्स हैं. जैसे आपका इसके अंदर हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अप टू इंफिनिटी. अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? आपके पॉजिटिव हैं.
ठीक है, आपकी जो सीरीज थी आप उस सीरीज में ये अज्यूम करिए कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट सीरीज में पॉजिटिव है। तो नेगेटिव, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स का सम सपोजिंगली -k है, ठीक है, और जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं सिंस वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अप टू इंफिनिटी। तो अब मैं सिर्फ -k को हटाकर a1 a2 का मैं अगर अपनी सीक्वेंस के अंदर सिर्फ a1 a2 a3 an रखती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा तो मेरे को सिर्फ अपनी इतनी सीरीज का चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, जो पॉजिटिव टर्म्स है मुझे सिर्फ उसका चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग Sn की लिमिट L आ जाएगी, फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, सिर्फ इस वाली टर्म की जो सॉरी इस वाली टर्म की लिमिट अगर आपके पास सपोज L आ जाएगी तो इस पूरी सीरीज की लिमिट क्या होगी, L माइनस k, विच इज अगेन अ फाइनाइट नंबर। तो अगर मेरी जो पॉजिटिव टर्म वाली पार्ट है सीरीज के अंदर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मतलब पूरी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, L माइनस k, राइट। यस मैम। तो मेरी पूरी सीक्वेंस या सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरी पूरी सीरीज अगर मेरी पूरी सीरीज सॉरी पूरी नहीं, जो मेरी पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो मेरी डाइवर्जेंट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी, इंफिनिटी, राइट। इन्फिनिटी में से आप k माइनस करोगे तो वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तब भी पूरी सीरीज डाइवर्जेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्रक्स इतना है, आप उसको विजुअलाइज करिए कि अगर आपके पास पूरी सीरीज है उसमें से कुछ एलिमेंट्स आप हटा भी देंगे तो जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसका नेचर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसकी वो निकालकर कि कोई यूनिक नंबर उसकी लिमिट है या कोई इनफाइनाइट वैल्यू उसकी लिमिट है, आप बाकी से प्लस या माइनस जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नेचर तो चेंज नहीं होगा ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। मैम हाँ जी, मैम ऐसा जरूरी है जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग में ही आए? नहीं जरूरी नहीं है, अगर बीच में आते हैं तो भी हम उनको पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे? नहीं वो आप नेगेटिव अगर आप उसको ऑर्डर में लगाएंगे तो आप उसको साइड पहले कर सकते हैं उसको। मैम वो तो फिर रीअरेंज होके वो लेफ्ट साइड पे ही चले जाएंगे ना सारे। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। ओके मैम। जब आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो उसको तो एक आप यू वुड लाइक टू अरेंज, व्हेन यू आर प्लेइंग विद नंबर्स यू वुड लाइक टू अरेंज द नंबर्स, राइट। यू कंसिडर मैथ्स एज अ ब्यूटीफुल थिंग, देन ओनली यू विल एंजॉय, मतलब आप उसके अंदर नंबर्स के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो यू वुड लाइक टू अरेंज द नंबर्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। Excuse me, ma'am. I am not a maths person. I am a computer science person, but still I like maths. ठीक है, I am originally I am a computer science person. ठीक है। ओके मैम। Next is a very important statement. You can write down that statement. It is called as the Cauchy's convergence principle for series. You can write down this statement. Cauchy's convergence principle for series. Cauchy's convergence principle for series. The necessary and sufficient condition for an infinite series. The necessary and sufficient condition. The necessary and sufficient condition for an infinite series sigma un. Sigma un, I hope you all understand how I am going to write. यस मैम। ये ऊपर नहीं है,
The necessary and sufficient condition for an infinite series sigma un to converge is that given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, no matter how small, we can find, no matter how small, we can find a positive integer, capital N, function of, which is a function of epsilon. Like this you can write down. We can find a number, we can find a positive number, a positive integer, I would say, a positive integer capital N, which is a function of epsilon, such that I'm just writing the statement, please. Un plus 1 plus un plus 2 plus un plus 3 plus un is less than epsilon for all n greater than m, sorry, n greater than capital N and m is equal to 1, 2 and so on. I hope this statement is clear. Ma'am, it is not clear. Can you please explain? Writing is clear this time. I Yes, tried my ma'am, best. writing is clear. Yeah, this time I mean that only. I'm going to explain, of course. Yes, ma'am. Of course, I'm going to explain what it means. Just that you have to just write down here what I have asked you to write. I'll explain for sure. So this is just saying that कि अगर हम अपनी सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स को हटाने के बाद, हम अपनी इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स को हटाने के बाद अगर हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं जहां पर एलिमेंट्स का सम इज लेस देन एप्सिलॉन, देन वी से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. So now let us explore these things, what it means, how we can imply these things. ठीक है, now let us explore that part. So first part you can write down it as the necessary condition for convergence. Please write down the necessary condition. As of now I said the necessary and the sufficient condition. Now let us break these two and define the necessary condition and the sufficient condition for convergence. So the necessary condition for convergence is that the necessary condition for a series, positive term series, the necessary condition for a positive term series to be convergent is that limit of un is equal to 0.
The necessary condition for convergence for a positive term series sigma un is that limit of un n tending to infinity is 0. So what we want to define here is, we can write this this limit also as, we can also write un as, what is un? Un is equal to nth term. Yes, it is the nth term, or we can also write it as Sn minus Sn minus 1. Minus 1. Right? We can write it like this. Just a minute. Ma'am, Yes. ma'am, limit n tends to infinity un is equal to 0 or not equal to 0? If I want a, it is equal to 0. If it is confusing here, Okay. Equal to 0. So I want, if I apply un, आप un को इस तरह से define कर सकते हो, आप un को इस तरह से define कर सकते हो, and if I take limit here, if I take on both the sides, left hand side and right hand side limit, then it should be equal to 0. It is limit here again, and tending to infinity, and tending to infinity. Fine. Is it fine? Okay. Now, if you want to understand this rule, how we define this, कि हमने ऐसा क्यों कहा that this is the necessary condition that limit of n tending to infinity un should be equal to 0. Why we are saying like that? अभी हमने क्या कहा कि सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स को हटाने के बाद या कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है. तो हम उस बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम लिमिट ऑफ Sn निकालेंगे, हमने क्या कहा था, अगर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट Sn क्या होगा, यूनिक फाइनाइट नंबर होना चाहिए. ये हमने कहा था. यस मैम. ठीक है. यस. तो इसी तरह से अगर हम अब सपोज Sn में से हमने एक एलिमेंट हटा दिया, हमने लास्ट एलिमेंट हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास? Sn minus 1. Sn minus 1. तो Sn minus 1 की लिमिट निकालेंगे तो वो भी हमारी वही यूनिक नंबर आनी चाहिए. ठीक है. नाउ अगर हम दोनों लिमिट्स को माइनस कर देंगे तो 0 होना चाहिए. Is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So everything in maths should be intuitively, not Yes, ma'am. abstract manner में नहीं होना चाहिए maths में. It should be all intuitively. What I mean to say here is कि जो आपने ये statement लिखी है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? Limit Sn minus limit Sn minus 1, and now if the series is convergent या divergent, then the nature of limit Sn and the limit Sn minus 1 is not going to change. उसमें से कोई नंबर हम ऐड कर दें या रिमूव कर दें तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. तो इसकी भी वैल्यू अगर L है तो इसकी भी वैल्यू L होनी चाहिए, एंड L minus L is equal to 0. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the necessary condition for a series to be convergent is, now we can conclude that the necessary condition for a series to be convergent is
limit of un is equal to where n tending to infinity is equal to 0. Is it fine? अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे अब ज्योमेट्रिक सीरीज के रिस्पेक्ट में, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? अगर मैं कॉमन रेशियो मेरा हाफ है, तो कॉमन रेशियो हाफ से अगर मैं डिफाइन करती हूँ 1/2, 1/8, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, what it is tending towards? It is going towards 0. ठीक है? It is going towards 0. When I define n to be infinity, that is 2 raised to power infinity, क्या होगा? 0 होगा. So the term is going towards 0. So that is why this series is convergent. Fine. So the necessary condition for a series to be convergent is that limit of n tending to infinity un is equal to 0. तो इसका मतलब ऐसा है कि ये हमने कहा नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट un इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है? अगर कोई सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसका nth टर्म की लिमिट 0 होगी. फाइन. ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन ऐसा जरूर है कि जिसकी लिमिट लिमिट ऑफ un वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर 0 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही होगी. ये पक्का है. ठीक है? Ma'am, can you repeat what you just said right now? I missed that line. I said the condition that we just wrote, the condition that we just wrote now, that this one is a necessary condition, which It means that if the series is convergent, then that condition, then may the hold or may limit. not hold. If the series is convergent, that this condition may hold or may not hold. But if this condition holds, then the series is 100% convergent. Okay. ठीक है? Yes, ma'am. Now test. Now we are going to do a lot of so okay, you can write down the statement. We will do how. Okay, you can write down the statement. So now we are going to do the test of convergence for positive term series. We are going to do lots of tests. We are going to do around 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests, 7, 8 tests for convergence now. We are going to do 7, 8 tests to check whether the given positive term series is convergent or not. Fine. Ma'am, आपने sufficient conditions तो बोला ही नहीं. You said you'll do necessary and sufficient. Okay. sufficient. Oh, sorry. Okay. Thank you, ma'am. So if limit of the so there is no as such sufficient condition for a series to be convergent. It is included in the previous statement that I wrote, Cauchy's convergence principle for series. There only we wrote the necessary and the sufficient condition for us infinite series to be convergent. वैसे अलग से नहीं है. ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Okay. So first test is your comparison test. First test is your comparison test. This comparison test has 2 parts. ठीक है? Sorry, this comparison test has 3 parts.
you can write today, you can write down the statement, then we can proceed tomorrow. Okay, quickly you can write down the statement. So there are three parts of the comparison statement. The statements are as follows. Part 1, if two positive term series sigma un and sigma vn, if two positive term series sigma un and sigma vn are such that sigma 1 is convergent, are such that sigma vn is convergent, and un is less than equal to vn for all n, then sigma un is also convergent. This is the first part. Ma'am, could you please repeat the whole statement again from the starting? Yes, if two positive, so I am saying the definition of comparison test. Comparison test has three parts. This is the first part. This is the first part. And first part says that if two positive term series sigma un and sigma vn are such that sigma vn is convergent, this is given to you that sigma vn is convergent, then and un is less than equal to vn for all n. un is less than equal to vn for all n. Then sigma un is also convergent. Now second part is, you just write down second part. I will explain you. We will do questions tomorrow. If two positive term series sigma un and sigma vn such that if two positive term series sigma un and sigma vn be such that this is my part 2, that sigma vn is divergent, sigma vn is divergent, and un is greater than equal to vn, un is greater than equal to vn for all n, then sigma un is divergent. Then sigma un is divergent. ठीक है? Is it fine? Have you all written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now third part is, Yes, ma'am. Yes, ma'am. third part is, if two positive term series sigma un and sigma vn such that if two positive term series sigma un and sigma vn be such that एक second, limit of n tending to infinity un divided by vn is equal to L, a finite quantity not equal to 0, a finite quantity not equal to 0, then एक second, then sigma un, then sigma un and sigma vn converge or
diverge, converge or diverge together. Have you written the statement? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that was the statement. That was the statement. If required, we will do the proof, and if not required, we will just do the questions. Okay? मैम पार्ट थर्ड का वैसे मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, इनकी अगर लिमिट्स? सपोज आपके पास एक सीरीज है जो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में एक नई सीरीज फाइंड आउट, बेटा मैं ना अभी क्लास बंद करूंगी, आपकी शायद नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है? यस मैम। ये Yes, ऑनलाइन ma'am. Yes, ma'am. ऑनलाइन प्रोसेस है, नहीं तो मैं आपको दूसरी क्लास में एंटर लेट नहीं करना चाहिए, सो प्लीज क्विकली एग्जिट, आई हैव ऑलरेडी टेकन योर अटेंडेंस। 3 Okay, बजे Thank you, ma'am. thank you, ma'am. ओके Very Thank you, ma'am. ma'am. मैम ओके डाउट तो कुछ नहीं। बेटा यू कैन आस्क नेक्स्ट टाइम। Thank you, ma'am. ओके